nature. All of them or many of them we have to miss when we have to be a serious spiritual seeker of studying Shastras. Even though it appears that we are in a dull manner without any active dynamism, just studying Shastras. But later on we know through the Shastra Adhyanam, the Jnanam, the Bhakti when they come, the joy of this is many, many times more than whatever the small little pleasures of the world they are there. Those pleasures are only at the gross level, maybe a sense tickling level, the objective level. But this is the Shuddha Satvika Ananda. It is the Viveka Ananda. It is the Vairagya Ananda. It is Shamadamadi Indriya Mano Nigraha Ananda. Here we have the Bhakti Ananda. Here we have the Yoga Sadhana Ananda. Here we have the Jnana Ananda. Here we have the Atma Ananda. Here we have the Brahma Ananda. Here we have the Shashvata Ananda. Any day this is more glorious than that. Therefore, slowly rise above that idea of Array, I'm missing this or that by being regular to our Shastra Jnanam. But this is the only way that the truth is apprehended, understood, and we can do sadhana and realize. In all those other pleasures, temporary pleasures, they are living only as a, with so many vasanas and desires and worldliness, and also an emptiness as to what we have got. मजा मजा किया लेकिन वो मजा से ज़्यादा सजा ही था तो किमहगम साधना करवम किमहगम पापमकरवम that thought. Now I tell you one rahasyam is what while we are doing sadhana, as much we think about the worldly people that they are enjoying, while enjoying, indulging in the world, they also think about us. अरे हम तो इसमें फंसे हैं भोग में. See those people daily studying shastras and they are slowly growing in spirituality. जो भी हो दूसरे के खेत वाला घास हरा दिखता है बट एनीवे हमारा वाला घास वाकई हरा है. हमें दूसरे खेत में देखने की जरूरत ही नहीं है. इज इट नॉट? वी आर डूइंग द बेस्ट ऑफ द थिंग ऑफ रिमाइंडिंग आवर सेल्फ ऑफ द लॉर्ड. ओनली थिंग इज आओ थोड़ा डीपर करो, इंटेंस करो, सीरियस करो, जेन्युइनली करो, अपने आप को अप्लाई करो, है ना. इन दैट डेप्थ यू विल सी दैट नॉलेज व्हेन इट डॉन्स, इतना आनंद उसका रहेगा रे बाप रे. सो टू व्हेन द निरहंकार निर्ममकार वाला भक्ति शरणागति में हो जाती है ना, व्हेन यू नो दैट माय लॉर्ड इज देयर ऑल परवेडिंग एंड इज टेकिंग केयर ऑफ मी, अरे बाप रे इससे बढ़कर और क्या आनंद होगा दसो. शाश्वत आनंद है वो, पक्का वो रूटेड आनंद. इट्स नॉट ए सुपरफिशियल थिंग जो बस मुंह में लगाओ, एक सेकंड के लिए रहेगा प्लेजर, उसको थूको या अंदर निगलो, नहीं तो दुखी रहेगा. ऐसा वाला सुख नहीं है ये वाला. दिस इज अ शाश्वत सुख. If that is not so, why so many shastras have come to tell us about this bhakti jnana as the means for moksha, and why those rishi muni devatas are the great people are worshipped by us, respected by us, if this path and goal are not great. So they are certainly surely great, and what we are doing is the best thing. Thus, in this world of spirituality, we being alone, we have to motivate ourselves, we have to inspire ourselves, we have to empower ourselves, empower with our own confidences, with our own shraddhas, of course, by being in the company of saints, sages, and prayers to God Guru. इस तरह से अपने आप का सारा सामान संभालते रहना, है ना. श्रद्धा संबल जो कहते हैं तुलसी रामायण में, आगे चलते रहना. And slowly we discover when that knowledge bhakti comes, we start becoming independent of dependency on the world. Not only we become happy, we even become the source of subtle help to others. Grossly, monetarily, we may not help, but subtly in giving them the correct way of living life or the giving bhakti jnana, we can become support to others. So the purpose of all these thoughts is what we are doing is the highest and noblest which a human being can do. But इसी को refine करो, intensify करो, deep करो, sincere करो, serious करो, और भगवत भक्त अनुग्रह से भगवत प्राप्ति से मुक्त हो जाए. ओम ओम ओम
ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओं नमस्ताराय नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओं श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ओं परब्रह्मणे श्रुतिमात्रे समस्त ब्रह्म विद्या भक्ति विद्या योग विद्या धर्म विद्याचार्येभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यो देवताभ्यो नमः। ओं श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओं श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओं श्री वशिष्ठ विश्वामित्राभ्यां नमः। ओं श्री वाल्मीकि तुलसीदासाभ्यां नमः। ओं श्री वेदव्यास महर्षे नमः। ओं श्री रामायण शास्त्रस्य समस्त आचार्येभ्यो नमः। श्री रामचंद्र स्वामिनः भक्तेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। तेषां सर्वेषां कृपानुग्रहेण उपनिषदुक्त ब्रह्मात्मिकमोदस्य अस्मिन् क्षणे एव अनुभवसिद्ध्यर्थं पुराणे इतिहासोक्त भगवद्भागवत ऋषिमुनिगुरुदेवता दर्शनानुग्रहानुभव प्राप्त्यर्थं सनातनधर्मस्य वैदिक हैन्दव संस्कृतेः साम्प्रदायानां शास्त्राणां साधनानां योगानां वेदान्तानाम् अनेकानेक उपायानां प्रक्रियाणां च पुनरुत्थान पुनरुद्धारण समस्त दिग्मंडल भूमंडल विश्वव्याप्ति द्वारा समस्त विश्व आध्यात्मिक प्रगति द्वारा विश्व शांति कल्याण एकता सामरस्य सौभ्रातृत्व सौमनस्य पुरोभिवृद्ध्यर्थम अस्मिन् धर्म संस्थापन कार्य निश्चित अस्माकं सह समस्त कंकणबद्ध साधक भक्त सेवक धर्म संस्थापकानां परिपूर्णायुरारोग्यैश्वर्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर विजयादि सत्संपदा साधना सानुकूलता शक्ति प्राप्ति द्वारा बाह्य अभ्यंतर समस्त शत्रु विघ्न निर्मूलन निवारण द्वारा अस्मिन् धर्म संस्थापन कार्ये दिग्विजयार्थं श्री ब्रह्मांड पुराणांतर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्रस्य पारायणम् अध्ययनं तदनन्तरं नित्य श्लोकानां पारायणं तदनन्तरं कमला मातु सहस्रनामावल्याः पारायणं तदनन्तरं श्री देव्याः नवरात्रि संदर्भे स्तोत्राणां पारायणं वयं सर्वे करिष्यामः। आदौ श्री रामनाम संकीर्तनम्। ओम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम। ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। अतः श्री ब्रह्मांड पुराणांतर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्रम् उत्तरकाण्डं पंचम सर्गः श्रीराम गीता श्री महादेव उवाच श्रीराम उवाच। फ्रेंड्स 30th mantra कारण शरीर we saw yesterday. Once more let us chant and see it and the further shloka start. अनाद्य निर्वाच्यमपीह कारणं माया प्रधानं तु परं शरीरकम् उपाधिभेदात्तु यतः पृथक् स्थितं स्वात्मानमात्मन्यवधारयेत् क्रमात् कोशेष्वयं तेषु तु तत्तदाकृति हि विभाति संगात् स्फटिकोपलो यथा असंगरूपोऽयमजो यतोऽद्वयः विज्ञायतेऽस्मिन् परितो विचारिते बुद्धेस्त्रिधा वृत्तिरपीह दृश्यते स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः अन्योन्यतोऽस्मिन् व्यभिचारतो मृषा नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे देहेन्द्रियप्राणमनश्चिदात्मनां संघातजस्रं परिवर्तते धियः वृत्तिस्तमो मूलतयाज्ञलक्षणा यावत् भवेत्तावदसौ भवोद्भवः नेति प्रमाणेन निराकृताखिलः हृदा समास्वादितचिद्घनामृतः त्यजेत शेषं जगदात्तसत्रसं पीत्वा यथाम्भः प्रजहाति तत्फलम्। ओम शांति शांति शांति।
Now very conspicuous, very crystal clear. This is the Sthula Shariram. This is made up of Panchikruta Panchamahabhutas. This particular body in this way is given to us because of our own karma. How long it will live, what Sukha Dukkha it gives, that also decided according to the karma. The purpose of this Deha is Ayatanam, place of stay for me to stay. The two things about it are this is Nitya Parivartana Shila and this is Nashvara. Most important is this is only Upadhi to me and I am not this. First thing about the Annamaya Kosha or Stula Sharira, these are the things we have understood. Then second one is Sukshma Sharira. Within this Stula Sharira is our own second Sukshma Sharira, which is also a Upadhi given to us. If Stula Sharira is Bhoga Ayatanam, the Sukshma Sharira is Bhoga Sadhanam. Variety of the things which we have in our house for Sukha, like that. This Sukshma Sharira has got 17 components. Be clear about it. 5 Jnanendriyas, 5 Karmendriyas, 5 Pranas, 1 Mana, 1 Buddhi. All these 17 is called Sukshma Shariram. These things have come from Apanchigurta Panchamahabhuta. And whose Sukshma Sharira is in what way is also because of the Sat Karma Janyam, because of the karma only. And this is called Bhoga Sadhanam. सो अपंचीकृत पंचमहाभूत से बना है, भोग साधन है, 17 इसमें कंपोनेंट्स हैं एंड ये कर्म के कारण मतलब कर्म वासनाओं के कारण एवरीवन हैज डिफरेंट दोज सूक्ष्म शरीरास. ओके, सूक्ष्म मन बुद्धि दश इंद्रिययुतम प्राणैः अपंचीकृत प्राणैः देन अपंचीकृत भूत संभवम देन भोक्तुः सुखादेः अनुसाधनम भवेत् शरीरम. Anyat viduha atmanah buddha buddha. The wise people know that the self is apart from the sukshma sharira and sukshma sharira is not me, other than me. Two things we have seen. Now the third one is the karana sharira. The karana sharira kya hai? Anadi anirvachya and avidya rupa and vasana rupa. Okay, Anadi, when it has begun, the question is illogical. We proved yesterday. Then Anirvacha, it being a Karana, only when it expresses as the Sukshma and Sthula Karyas that we can assess that in the Karana Sharira, these were the Vasanas. But without that expression, exactly what it cannot be Nirvachita. It cannot be defined in any of the languages. So then, third one is what? It is an avidya rupa. In that karana sharira, complete avidya means the Lord is not known, oneself is not known, whole world also is not known. Pure stuporous and slumberous thing which we experience in the nidra avastha. Then the other aspect in this Karana Sharira is the name it came in got the Karana is it has got the Karanas for the Sthula and Sukshma Sharira in the Bija Rupa there. So those Bija Rupa Karanas only expresses Karya as Sthula and Sukshma Sharira. So in this way, Anadi Anirvachyam Apiha Karanam and Maya Pradhanam tu Param Sharirakam. Hmm. Hmm. Param Sharirakam is third of the Shariras. It is Maya Pradhanam. It is Maya at the individual level. It's called as Avidya. It is called as Avyakta. It is called Avyakruta. And that is Karana Sharira. Okay. These are the three. Now, these three are Upadhis. Okay. The four aspects, let us very carefully listen. बहुत carefully सुने. What is the Upadhi means? One, ki through this only presence of Paramatma is recognized. Like through the fans and tube lights or lights, the presence of electricity is recognized. Otherwise, how do you know electricity flow हो रहा है कि नहीं? पकड़ोगे क्या तार को? This is the meaning of Upadhi 1. Second is what?
It is he in whose presence, the Paramatma, that these upadhis also are doing the purpose for which they are there. Again, if the electricity is not there, can the light glow? Can the fan the move? Can the fan move? Can all these refrigerators cool? This is the second upadhi. Third one is what? Ki while expressing through those upadhis, if one is not very careful alert about the distinction and separation between them, a slip will happen. Slipping is selfie. सेल्फी को 10 बार बोलो, सेल्फी 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 फिसल जाते हैं. We slip down if we're not careful. What is that slipping down? Whatever the changes that are happening in the upadhi, with that identification happens. If we slip in our alertness, awareness, when that slip happens, be attentive. The same Paramatma appears as a jiva, lives as a jiva, suffers as a jiva. This is called third upadhi. The fourth one is what? With the help of these upadhis only, that jiva does sadhana, after which the final step of sadhana is he detaches himself from upadhis and establishes in his own essential self and becomes mukta. After that, again through the same upadhis, as a jivan mukta, he expresses now without getting bound by them, without getting influenced by them. So this way, 4 or 5 ways, what is the meaning of upadhi, we can understand. Okay, तो उपाधि में क्या होता है? Like doctory is an upadhi. Through that upadhi, I express as a doctor in serving the world. What is wrong? But that upadhi of the doctory troubles me also, because I'm not lawyer, engineer, or anything. That is one limitation. Second is what? I just expect the money from the patients or want recognition, etc. That means I am lost in that identity with the upadhi. So एक डॉक्टर मुक्त होकर भी डॉक्टरी कर सकता है, थ्रू द उपाधि ऑफ द मेडिसिन नॉलेज ही हैज गॉट, बाउंड होकर भी मेडिकल डॉक्टरी प्रोफेशन कर सकता है. Like that, number of examples you can have. In the same way, Stula Sharira, Sukshma Sharira, Karana Shariras are the Upadhis to Paramatma. Through them, we have to recognize Paramatma. Because of them, these three are working. Because of that Paramatma, these three are working. And this Paramatma, when he doesn't maintain the distance of detachment with them, slightly gives a chance. When he falls in identity with them, he only becomes jiva, and that is what you and I. And the jiva has suffering as per the inevitable modification that happen in the upadhi from their birth up to death through all the changes. So इतना समझकर क्या करना है? उपाधि भेदातु यतः पृथक स्थितम. So these three are the upadhis. Therefore, I am separate from the upadhi. है ना? उपाधि से एक्सप्रेस होने वाला उपाधि से अलग है. लाइक द वाइफ रूपी उपाधि से एक्सप्रेस होने वाला हस्बैंड अलग है, एंड दैट मैन इज डिफरेंट फ्रॉम द उपाधि एक्सप्रेस्ड हस्बैंड. द ओरिजिनलिटी इज द मैन. Okay, then in the common language also, when a question asked or when we think for ourselves, we say that my dream, we say my sleep, we say my jagrad avastha. So they are mine. That means I am other than them. Through them I can express, but I need not be bound. Not knowing my essential self, I get bound by them. Suffer as a jiva. And so many examples are given of that king's son, prince, childhood may lost somewhere, then caught by and brought up by the tribals who are very poor and poverty में रहने वाले. He thinks he's like a tribal only he is for a great time. Suddenly by some other reason later on he comes to know वो तो उस देश के राजा के पुत्र है. Immediately he just comes out of all that tribal life and becomes the prince and thereafter king. ऐसे बहुत examples है ना. We are the self, but considering identified with the upadhi as a jiva, we suffer. With the hita upadesha of the guru, when we understand and meditate, we discover ourselves. Okay,
So, like Valmiki is a great Brahmana Rishi is. Somehow he has gone into that Bhilla Jati mein. They brought him up, but he is by birth Brahmana. Not knowing it, every day there is fighting regarding Valmiki. Yesterday कोई वाल्मीकि स्टैचू के लिए लड़ रहे थे. He is a Brahma Jnani, he is a Rishi, he is a Shuddha Brahmana. So, anyway, we brought up somewhere there, therefore it like that. We are also the whole education system, whole life at home, in the society, whole thing is making us live life at the ग्रास जागृत अवस्था लेवल, सॉरी स्थूल शरीर में या सूक्ष्म में कारण में, बियॉन्ड दैट हम है करके कोई बताते नहीं हमको, और जो बता रहे हैं गुरु, वी डोंट गो टू देम. एनीवे द कंक्लूजन ऑफ दिस देहत्रय विवेक के द्वारा आत्मा को पाना क्या है कि उपाधि भेदातु दीज थ्री आर द उपाधिस थ्रू देम आई एम एक्सप्रेसिंग यथा पृथक स्थितम आई एम समबडी अदर देन हिम एंड हु एम आई सो आत्मानम आत्मनि अवधारयेत क्रमात् द रियल सेल्फ इन आवर ओन सेल्फ वी हैव टू स्लोली डिस्कवर बाय नोइंग these three to be the upadhis and by slowly and steadily rejecting them. Now it's a huge subject, है ना. उसका फिर इतने सारे थॉट्स पॉइंट्स हो सकते हैं. कटिंग शॉर्ट ऑल ऑफ देम, वी मस्ट नो that we are actually the witness of all these three sthula sukshma karana dehas, are the ones who are empowering them, enlivening them. We need not be conditioned by them, or there is a principle in us of pure conscious existence blissful self which is not conditioned by these three expressions of sthula sukshma karana sharira, and that is my original essential self. This knowledge, with repeated manana chintana, we have to make it stronger, and actually on the seat of dhyana, going beyond these three dehas, the three deha atita atma prapti we have to gain. This is what is the purpose and essence and summary of Bhagavan Rama teaching the Dehatraya Viveka. Not three dehas are other than me, I am somebody other than them. हो गया. Now in the 31वां श्लोक में, in the same way, the other technique of Panchakosha Viveka is given. And these three dehas and the Panchakoshas are exactly same. Only in in dividing the three koshas, three dehas in the Panchakosha Rupa, that division is the only one where there is a difference. Okay, the koshas 5 which we have are Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, Anandamaya Kosha. Why they are called as kosha? Kosha means sheath. Sheath means cover. Like every pen has its own sheath cover. Every sword has its own sheath cover. Every scissors you put in a sheath cover. Everybody has their specs kept in a box that is called as sheath. Sheath is that in which that main object is kept to be safe, and that inner object is not touched by the outer thing. Therefore, neither the inner thing is troubled by the outer, nor the outer by inner. Among all the example, the sheath is the best example. Sword and the sheath of the sword, the kosh. So inside the sheath there is a sword. Sword is protected from all outer wind and outer things by that sheath. But the sheath never touches the sword. Otherwise, the sheath gets broken and the sword becomes blunt. In the same way, पंचकोशों के भीतर मैं नामक आत्मा हूं. इन पांचों कोशों को हम ज्ञान के द्वारा, समझदारी के द्वारा पार करते करते अपने निज स्वरूप स्वोड स्थानीय आत्मा को पाना है. दिस कॉल्ड एज पंचकोश विवेक. दिस इज एग्जॉस्टिवली taught to us in the Taittiriya Upanishad. The Dehatraya Avastatraya is taught to us by the Mandukya Upanishad more beautifully. So the shloka in Atmabodha is Panchakoshaadi Yogena Tattanmaya iva stitah Shuddhatma Neelavastradi Yogena Spatiko Yatha. What our Shankara Bhagavan wrote in Atmabodha is exactly same he has taken from this shloka which Sri Ramji is teaching Lakshmana Swami.
What are the Panchakoshas? What is the Panchakosha Viveka? Study the 31st mantra. Kosheshu ayam. Ayam means this Atma. Kosheshu teshu tu. Among these Panchakoshas, tattad akriti vibhati. है ना? Expressing through those Panchakoshas, because of the proximity with those koshas, it vibhati appears to have taken the shape of these five koshas. So again I am telling, ayam Paramatma teshu kosheshu tattadakriti vibhati. And while expressing through them, it takes as if is the important word, the akara of the those five koshas. Why? Sangat. Sangat means because of proximity. And this thing is very beautifully explained with very simple example. That is what Shuddhatma Neela Vastradi Yogena Spatikaha. When the Neela, Pita, then Harita, Raktavarna Vastra, black, blue, red, green, flowers are the clothes. When they are brought very near to a Spatika, or Spatika is brought near to them, that Spatika or the crystal appears as if it has gathered those colors. And it appears to have that colored. And never ever that color enter the Spatika. It is only the proximity of the Spatika to the colored cloth makes the Spatika appear in this color. Take away the color cloth or take away the Spatika. Spatika is found to be in its own pristine, crystal clear form without any color in it. So same what is said here, Neela Neela Vastra Yogin Spatiko Yatha. Same example here he says, Spatika Upalaha Yatha. Upala means the pebble or any of that crystal. तो स्फटिक के पास कोई भी रंग वाला सब्जेक्ट रखो ऑब्जेक्ट, वो स्फटिक में वो रंग आता है ऐसा लगता है. Another example is in front of mirror. Anybody appears in the mirror, that reflection is there. But the reflection never retains any of the form. It only appears, है ना? Otherwise मैं चला गया लेकिन मेरा प्रतिबिंब अभी भी है, तो next fellow cannot see his face. And then nobody will buy or sell the mirror for that purpose. Okay. So these five koshas, and I am in very proximity with them, because of which these panchakoshas appear to be me. Thus, I live as these panchakoshas only, as if I am them. Whereas I am कौन है? पंचकोशों को सपोर्ट करते हुए, उनसे कभी भी स्पर्श नहीं होते हुए, उनसे हमेशा अलग रहने वाला, शीत के अंदर स्वर्ण के समान शुद्ध आत्मा हूं. It is called Panchakosha Viveka. Okay. Asanga Rupoyam Ajo Yataha Advayaha. I am otherwise like that crystal, Asangaha, never touched by any of the modifications of the Panchakoshas. Ajaha, when the Panchakoshas are born, growing, dying, they don't touch me. Then third one is Advayaha. Such me is one without second. The koshas are many, but I am one without second. Vijnayate. Now such self, which is beyond Panchakoshas, Vijnayate, can be experienced when Paritaha Vicharite. Paritaha, Avitaha, again and again for months together, years together, having heard from the Guru the nature of Panchakoshas, nature of the self, and then how to remain as Sakshi to them. When all these are learnt and that sadhana is done for long time, that पंचकोश के अंदर रहने वाला, उनसे कभी भी स्पर्श नहीं होने वाला, हमेशा मुक्त स्वरूप में रहने वाला, the self one can realize and get liberated. Okay. Now, what are these Panchakoshas? Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya. Each of these koshas 2-2 मिनट या 3-3 मिनट कल के दिन हम पढ़ेंगे, और उसका विधत्री देह साम्य अभी बताएंगे. What is Sthura Deha there is here Annamaya Kosha. Clear? What is Karana Deha there, the third one, is here Anandamaya Kosha. Now what is Sukshma Deha there is the Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya Kosha. So Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya Koshas are is equal to Sukshma Sharira. Anandamaya Kosha is equal to Karana Sharira. The Annamaya Kosha is equal to Sthula Sharira. हो गया, दोनों एक ही. थोड़ा सा और इसका पाठ और अध्ययन कल करेंगे.
Then tomorrow only the Dehatraya Viveka ho gaya, Panchakosha Viveka ho gaya. Now Avastatraya Viveka will be told. Then Gunatraya Atita will be told. With any of these methods, techniques on the seat of meditation, rejecting or going beyond the identity with Anatma, we can get identified with our own real Atma Vastu and thus get liberated from Anatma. दिस कॉल है तत्वमसि महावाक्य में साधना के रूप में हमको करना है सिद्धांत समझने के बाद सिद्धांत इज व्हाट त्वम एंड तत् आर वन आई एम दैट ब्रह्मन बट त्वम आई एम नाउ कंसिडरिंग माई सेल्फ टू मी with these panchakoshas or three dehas or three avasthas. So through bhaga त्याग लक्षण पद्धति इन चीजों को हटाओगे तो इनके द्वारा जो परमात्मा चैतन्य भास रहा है उनको पकड़ोगे तो त्वम पद शोधन हो गया. That is me, the self. Same is done with the Ishvara. Then that Parabrahma in Ishvara and in me, the Atma, they are one. That experience is the final thing which gives us moksha. Let us all head towards that with our heads high and with our all sincere, deep efforts. Of course, time and again invoking grace of God, Guru and Shruti Mata, and again studying the Shastras and doing Manana Chintana due. Okay, now let us stop today. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate Om Shanti 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 Hari Om Sri Guru Bhyo Namaha Bol Sri Ramachandra Bhagavan Ki Jai Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantaraye Amritakalashastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanataya Sri Mahavishnave Namaha ओम भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्तके की घना घना रोग पर्वत दम्भोलिर मृत्युदारु कुटारिकाय नमो नमः ओम नासे रोग हरे समपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा ओम श्री हनुमत वीराय नमः ओम श्री हनुमते 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 नमः ओम ओम नमः शिवाय 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 नृसिंह मंत्रम ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च राम नाम राम 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 Kamala Sahasranamavali 100 to 200. Let us chant. Om Shri Kamala Matuhu Sahasranamavalihi
ओम वृद्ध्यै नमः, ओम ध्रुवायै नमः, ओम गत्यै नमः, ओम ईश्वर्यै नमः, ओम महिमायै नमः, ओम वृद्ध्यै नमः, ओम प्रमोदायै नमः, ओम उज्ज्वलोद्यमायै नमः, ओम अक्षयायै नमः, ओम वर्धमानायै नमः, ओम सुप्रकाशायै नमः, ओम विहंगमायै नमः, ओम नीरजायै नमः, ओम जनन्यै नमः, ओम नित्यायै नमः, ओम जयायै नमः, ओम रोचिष्मत्यै नमः, ओम शुभायै नमः, ओम तपोनुदायै नमः, ओम ज्वालायै नमः, ओम सुदीप्त्यै नमः, ओम अंशुमालिन्यै नमः, ओम अप्रमेयायै नमः, ओम त्रिधायै नमः, ओम सूक्ष्मायै नमः, ओम परायै नमः, ओम निर्वाणदायिन्यै नमः, ओम अवदातायै नमः, ओम सुशुद्धायै नमः, ओम अमोघाख्यायै नमः, ओम परंपरायै नमः, ओम संधानक्यै नमः, ओम शुद्धविद्यायै नमः, ओम सर्वभूतमहेश्वर्यै नमः, ओम लक्ष्म्यै नमः, ओम तुष्ट्यै नमः, ओम महाधीरायै नमः, ओम शान्त्यै नमः, ओम अपूरणे नमः, आपूरणे नवायै नमः, ओम अनुग्रहाशक्त्यै नमः, ओम आद्यायै नमः, ओम जगज्येष्ठायै नमः, ओम जगद्विद्यै नमः, ओम सत्यायै नमः, ओम प्रह्वायै नमः, ओम क्रियायोग्यायै नमः, ओम अपर्णायै नमः, ओम हलादिन्यै नमः, ओम शिवायै नमः, ओम संपूर्णाह्लादिन्यै नमः, ओम शुद्धायै नमः, ओम ज्योतिष्मत्यै नमः, ओम अमतावहायै नमः, ओम रजोवत्यै नमः, ओम अर्कप्रतिभायै नमः, ओम आकर्षिण्यै नमः, ओम कर्षिण्यै नमः, ओम रसायै नमः, ओम परायै वसुमत्यै नमः, ओम देव्यै नमः, ओम कान्त्यै नमः, ओम शान्त्यै नमः, ओम मत्यै नमः, ओम कलायै नमः, ओम कलङ्करहितायै कलायै नमः, ओम विशालायै नमः, ओम उद्दीपन्यै नमः, ओम रत्यै नमः, ओम संबोधिन्यै नमः, ओम हारिण्यै नमः, ओम प्रभावायै नमः, ओम भवभूतिदायै नमः, ओम अमृतस्यन्दिन्यै नमः, ओम जीवायै नमः, ओम जनन्यै नमः, ओम खण्डिकायै नमः, ओम स्थिरायै नमः, ओम धूमायै नमः, ओम कलावत्यै नमः, ओम पूर्णायै नमः, ओम भासुरायै नमः, ओम सुमत्यै नमः, ओम रसायै नमः, ओम शुद्धायै नमः, ओम ध्वनये नमः, ओम श्रुत्यै नमः, ओम सृष्ट्यै नमः, ओम विकृत्यै नमः, ओम कृष्ट्यै नमः, ओम प्रापण्यै नमः, ओम प्राणदायै नमः, ओम प्रह्वायै नमः, ओम विश्वायै नमः, ओम पाण्डुरवासिन्यै नमः, ओम अवन्यै नमः, ओम वज्रनलिकायै नमः, ओम चित्रायै नमः, ओम ब्रह्माण्डवासिन्यै नमः, ओम अनन्तरूपायै नमः, ओम अनन्तात्मने नमः, ओम अनन्तस्थायै नमः, ओम श्री कमलामात्रे नमः. Only 100 enough for the day. Let us do our few stotra chantings. Yesterday we have done Sitaji Kruta Gauri Vandana from Tulsi Ramayanam. Today, Dashamai Bala Tripura Sundari Stotra means Stotra is for the first day Bala Tripura Sundari. But how she herself takes the Dasha Rupa, she herself, that is what is the Stotra describes. Big Stotra, beautiful Stotra it is. It is from Meru Tantra is the text from there. This is given. Let us do it. Om Atha Dashamai Bala Tripura Sundari Stotram. Om Shri Kali Bagala Mukhi Chalalita Dhumravati Bhairavi Matangi Bhuvaneshwari Cha Kamala Shri Vajravairochani Tara Purva Mahapadena Kathita Vidya Swayam Shambhuna लीलारूपमयी च देशदशधा बाला तुमां पातु सा. So this is all 10 came in one shloka. Now each of them. श्यामां श्यामघनावभासरुचिरां नीलालकालङ्कृतां बिम्बोष्टीं बलिशत्रुवन्दितपदां बालार्ककोटिप्रभां त्रासत्राणकृपाणमुण्डदधतीं भक्ताय दानोद्यतां वन्दे सङ्कटनाशिनीं भगवतीं बालां स्वयं कालिकां ब्रह्मास्त्रां सुमुखीं बकारविभवां बालां बलाकीनिभां हस्तन्यस्तसमस्तवैरिरसनाम् अन्ये दधानां गदां
पीताम्भूषणगन्धमाल्यरुचिरां पीताम्बराङ्गाम्बरां वन्दे सङ्कटनाशिनीं भगवतीं बालां च बगलामुखीं बालार्कश्रुतिभास्करां त्रिनयनां मन्दस्मितां सन्मुखीं वामे पाशधनुर्धरां सुविभवां बाणं तथा दक्षिणे पारावारविहारिणीं परमयीं पद्मासने संस्थितां वन्दे सङ्कटनाशिनीं भगवतीं बालां स्वयं षोडशीं दीर्घां दीर्घकुचामुदग्रदशनां दुष्टच्छिदां देवतां क्रव्यादां कुटिलेक्षणां च कुटिलां काकध्वजां क्षुत्कृशां देवीं शूर्पकरां मलीनवसनां तां पिप्पलादार्चितां बालां सङ्कटनाशिनीं भगवतीं ध्यायामि धूमावतीम् उद्यत्कोटिदिवाकरप्रतिभटां बालार्कभाकर्पटां मालापुस्तकपाशमङ्कुशधरां दैत्येन्द्रमुण्डस्रजां पीनोत्तुङ्गपयोधरां त्रिनयनां ब्रह्मादिभिः संस्तुतां बालां सङ्कटनाशिनीं भगवतीं श्रीभैरवीं धीमहि वीणावादनतत्परां त्रिनयनां मन्दस्मितां सन्मुखीं वामे पाशधनुर्धरां तुनिकरे बाणं तथा दक्षिणे पारावारविहारिणीं परमयीं ब्रह्मासने संस्थितां वन्दे सङ्कटनाशिनीं भगवतीं मातङ्गिनीं बालिकाम् उद्यत्सूर्यनिभां च इन्दुमुकुटां इन्दीवरे संस्थितां हस्ते चारुवराभयं च दधतीं पाशं तथा चाङ्कुशं चित्रालङ्कृतमस्तकां त्रिनयनां ब्रह्मादिभिः सेवितां वन्दे सङ्कटनाशिनीं च भुवनेशीं वन्दे सङ्कटनाशिनीं च भुवनेशीं आदिबालां भजे देवीं काञ्चनसन्निभां त्रिनयनां फुल्लारविन्दस्थितां बिभ्राणां वरमब्जयुग्ममभयं हस्तैः किरीटोज्ज्वलां प्रालेयाचलसन्निभैश्च करिभिः आशिञ्च्यमानां सदा बालां सङ्कटनाशिनीं भगवतीं लक्ष्मीं भजे चेन्दिरां सञ्छिन्नां स्वशिरोविकीर्णकुटिलां वामे करे बिभ्रतीं तृप्तास्य स्वशरीरजैश्च रुधिरैः सन्तर्पयन्तीं सखीं सद्भक्ताय वरप्रदाननिरतां प्रेतासनाध्यासिनीं बालां सङ्कटनाशिनीं भगवतीं श्रीछिन्नमस्तां भजे उग्रामेकजटामनन्तसुखदां दूर्वादलाभामजां कर्त्री खड्गकपालनीकला कर्त्री खड्गकपालनीलकमलान् हस्तैर्वहन्तीं शिवां कण्ठे मुण्डस्रजां करालवदनां कञ्जासने संस्थितां वन्दे सङ्कटनाशिनीं भगवतीं बालां स्वयं तारिणीं मुखे श्रीमातङ्गी तदनु किल तारा च नयने तदन्तरगा काली भ्रुकुटिसदने भैरवी परा कटौ छिन्ना धूमावती जयकुचेन्दौ कमलजा पदांशे ब्रह्मास्त्रा जयति किल बाला दशमयी विराजन्मन्दारद्रुमकुसुमहारस्तनतटी परित्रासत्राणा स्फटिकगुटिका पुस्तकवरा गले रेखास्तिस्रो गमकगतिगीतैकनिपुणा सदा पीताहाला जयति किल बाला दशमयी इति श्रीमेरुतन्त्रे दशमयी बाला त्रिपुरसुन्दरी स्तोत्रं सम्पूर्णम् विराजन्मन्दार द्रुमकुसुमहारस्तनतटी परित्रासत्राणा स्फटिकगुटिका पुस्तकवरा गले रेखास्तिस्रो गमकगतिगीतैकनिपुणा सदा पीताहाला जयति किल बाला दशमयी is that last sloka iti Sri Meru Tantre Dashamai Bala Tripura Sundari Stotram Sampurnam. One of the beautiful stotra now, that is Bhagwan Adi Shankara written Devi Aparadha Kshamapana Stotram, asking the mother to forgive us for all the aparadhas of forgetting her whatever we have done. ओमत श्री आद्य शंकराचार्य विरचित श्री देव्यपराध क्षमापण स्तोत्रम ओम
ఓం న మంత్రం నో యంత్రం తదపి చ న జానే స్తుతిమహో న చాహ్వానం ధ్యానం తదపి చ న జానే స్తుతి కథాః న జానే ముద్రాస్తే తదపి చ న జానే విలపనం పరం జానే మాతః త్వదనుసరణం క్లేశహరణం విధేరజ్ఞానేన ద్రవిణ విరహేణ లసతయా విధేయా శక్యత్వాత్ తవ చరణయోర్యాచ్యుతిరభూత్ తదేతత్ క్షంతవ్యం జనని సకలోద్ధారిణి శివే కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతా న భవతి పృథివ్యాం పుత్రాస్తే జనని బహవః సంతి సరళాః పరం తేషాం మధ్యే విరళతరలోహం తవ సుతః మదీయోయం త్యాగః సముచితమిదన్నో తవ శివే కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతా న భవతి జగన్మాతర్మాతః తవ చరణసేవా నరచితా నవా దత్తం దేవి ద్రవిణమపి భూయస్తవ మయా తథాపి త్వం స్నేహం మయి నిరుపమం యత్ ప్రకురుషే కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతా న భవతి పరిత్యక్తా దేవా వివిధ విధి సేవా కులతయా మయా పంచాశీతే అధికమపనీతే తు వయసి ఇదానీం చేన్మాతః తవ యది కృపా నాపి భవితా నిరాలంబోలంబోదర జనని కమ్యామి శరణం శ్వపాకో జల్పాకో భవతి మధుపాకోపమగిరా నిరాతంకో రంకో విహరతి చిరం కోటి కనకైః తవాపర్ణే కర్ణే విశతి మనువర్ణే ఫలమిదం జనః కో జానీతే జనని జపనీయం జపవిధౌ చితాభస్మాలేపో గరళమశనం దిక్పటధరః జటాధారీ కంఠే భుజగపతిహారీ పశుపతిః కపాలీభూతేశో భజతి జగదీశైకపదవీం భవాని త్వత్పాణి గ్రహణ పరిపాఠీ ఫలమిదం నమోక్షస్యాకాంక్షా భవ విభవవాంఛాపి చ న మే న విజ్ఞానాపేక్షా శశిముఖి సుఖేచ్ఛాపి న పునః అతస్త్వాం సంయాచే జనని జననం యాతు మమ వై మృడాని రుద్రాణి శివ శివ భవానీతి జపతః నారాధితాసి విధినా వివిధోపచారైః కిం రోక్ష చింతన పరైర్న కృతం వచోభిః శ్యామే త్వమేవ యది కించన మయ్యనాథే ధత్సే కృపాముచితమంబ పరం తవైవ ఆపత్సుమగ్నః స్మరణం త్వదీయం కరోమి దుర్గే కరుణార్ణవే శివే నైతచ్చటత్వం మమ భావయేథాః క్షుధా తృషార్తా జననీం స్మరంతి జగదంబ విచిత్రమత్ర కిం పరిపూర్ణ కరుణాస్తి చేన్మయీ అపరాధ పరంపరాం నహి మాతా సముపేక్షతే సుతం మత్సమః పాతకీ నాస్తి పాపగ్ని త్వత్సమానహి ఏవం జ్ఞాత్వా మహాదేవి యథా యోగ్యం తథా కురు ఇది శ్రీమత్ శంకరాచార్య విరచితం శ్రీదేవి అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం సంపూర్ణం. One more we do today. Omata Shri Devi Stotram. Shri Bhagavanuvach. Om Namo Devyai Prakrutyai Cha Vidhatriyai Satatan Namaha Kalyanyai Kamadayai Cha Vrudhyai Siddhyai Namo Namaha Sachidanandarupinyai Samsararanaye Namaha Panchakrutya Vidhatriyai Te Bhuvaneshwai Namo Namaha Sarvadhishtana Rupayai Kutastayai Namo Namaha Ardhamartrarthabhutayai Hrullekayai Namo Namaha ज्ञातं मया किलमिदं त्वयि सन्निविष्टं त्वत्तोऽस्य सम्भवलयावपि मातरद्य शक्तिश्च तेऽस्य कर्णे विततप्रभावा ज्ञाताधुना सकललोकमयीति नूनं विस्तार्य सर्वमखिलं सदसद्विकारं सन्दर्शयस्य विकलं पुरुषाय काले तत्त्वैश्च षोडशभिरेव च सप्तभिश्च भासीन्द्रजालमिव नः किल रञ्जनाय न त्वामृते किमपि वस्तु गतं विभाति व्याप्यैव सर्वमखिलं त्वमवस्थितासि शक्तिं विना व्यवहृतो पुरुषोऽप्यशक्तः
बम्भण्यते जननि बुद्धिमता जनेन प्रीणासि विश्वमखिलं सततं प्रभावैः स्वैस्तेजसा च सकलं प्रकटीकरोषि अस्त्येव देवि तरसा किल कल्पकाले को वेद देवि चरितं तव वैभवस्य त्राता वयं जननि ते मधुकैटभाभ्यां लोकाश्च ते सुवितताः खलु दर्शिता वै नीताः सुखस्य भवने परमां च कोटिं यद्दर्शनं तव भवानि महाप्रभावं नाहं भवो न च विरिञ्चि विवेदमातः कोऽन्यो हि वेत्ति चरितं तव दुर्विभाव्यं कानीह सन्ति भुवनानि महाप्रभावे यस्मिन् भवानि रचिते रचनाकलापे अस्माभिरत्र भुवने हरिरन्य एव दृष्टः शिवः कमलजः प्रथितप्रभावः अन्येषु देवि भुवनेषु न सन्ति किं ते किं विद्म देवि विततं तव सुप्रभावं याचेऽम्बतेऽङ्घ्रिकमलं प्रणिपत्य कामं चित्ते सदा वसतु रूपमिदं तवैतत् नामापि वक्त्रकुहरे सततं तवैव सन्दर्शनं तव पदाम्बुजयोः सदैव भृत्योऽयमस्ति सततं मयि भावनीयं त्वां स्वामिनीति मनसा ननु चिन्तयामि एषा वयोरविरता किल देवि भूयात् व्याप्तिः सदैव जननी सुतयोरिवार्ये त्वं वेत्सि सर्वमखिलं भुवनप्रपञ्चं सर्वज्ञता परिसमाप्तिनितान्तभूमिः किं पामरेण जगदम्ब निवेदनीयं यद्युक्तमाचर भवानि तवेङ्गितं स्यात् ब्रह्मा सृजत्यवति विष्णुरूपामतिश्च संहारकारक इयं तु जने प्रसिद्धिः किं सत्यमेतदपि देवी तवेच्छया वै कर्तुं क्षमा वयमजे तव शक्तियुक्ताः धात्री धराधरसुतेन जगत् बिभर्ति आधार शक्तिरखिलं तव वै बिभर्ति सूर्योऽपि भाति वरदे प्रभयायुतस्ते त्वं सर्वमेतदखिलं विरजा विभासि ब्रह्माहमीश्वरवरः किल ते प्रभावात् सर्वे वयं जनियुता न यदातु नित्याः केऽन्ये सुराः शतमख प्रमुखाश्च नित्या नित्या त्वमेव जननी प्रकृतिः पुराणा त्वं चेद्भवानि नयसे पुरुषं पुराणं जानेऽहमद्य तव सन्निधिगः सदैव नो चेदहं विपुरनादिरनीह ईशः विश्वात्मधीरिति तमः प्रकृतिः सदैव विद्या त्वमेव ननु बुद्धिमतां नराणां शक्तिस्त्वमेव किल शक्तिमतां सदैव त्वं कीर्तिकान्तिकमलामलतुष्टिरूपा मुक्तिप्रदा विरतिरेव मनुष्यलोके गायत्र्यसि प्रथमवेदकला त्वमेव स्वाहा स्वधा भगवती सगुणार्धमात्रा आम्नाय एव विहितो निगमो भवत्या सञ्जीवनाय सततं सुरपूर्वजानां मोक्षार्थमेव रचयस्यखिलं प्रपञ्चं तेषां गताः खलु यतो ननु जीवभावम् अंशा अनादिनिधनस्य किलानघस्य पूर्णार्णवस्य वितता हि यथा तरङ्गाः जीवो यदा तु परिवेत्ति तवैव कृत्यं तं संहरस्य किलमेतदिति प्रसिद्धं नाट्यं नटेन रचितं विदथेऽन्तरङ्गे कार्ये कृते विरमसे प्रथितप्रभावा त्राता त्वमेव मम मोहमयाद्भवाब्धेः त्वामम्बिके सततमेमि महार्तिदे च रागादिभिर्विरचिते वितथे किलान्ते मामेव पाहि बहुदुःखकरे च काले नमो देवि महाविद्ये नमामि चरणौ तव सदा ज्ञानप्रकाशं मे देवि सर्वार्थदे शिवे सदा ज्ञानप्रकाशं मे देहि सर्वार्थदे शिवे इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे विष्णुना कृतं देवी स्तोत्रं सम्पूर्णम्. Tomorrow also another Devi Stotram from Vinaya Patrika. We do the Bhavani Stuti also from Vinaya Patrika. Then we complete that. Then we come to the Kali Stotram, where Bhadra Kali Stuti by Brahma Vishnu we see from Mahabhagavat Mahapurana. Then Kali Kashtakam also from written by Adi Shankara Bhagavan. Then we go for Saraswati Stotrams. In this way, every day some stotras, some ashtotras, Sahasranama, and our satsanga. All this we are doing. Oh Mother, oh Lord, you know it. Hey Guru Parampara, please bless all of us with that Tattva Anubhuti, Brahma Anubhuti, and Moksha.
Om. Let Sanatana Dharma, Vaidika Samskriti spread all over the universe. Let everyone become Adhyatmika and come out of Maya Kruta, entire samsara, self created. Let the whole world be in that peace and bliss. ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो विष्णुं प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभ तन्नो रामभार्या विद्महे भूजन्न सीता तम् आञ्जनेयाय विद्महे रामो तन्नो आशीष लक्ष्मण कात्यायन विद्महे कन्नकुमार तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम महादेवी च विद्महे लक्ष्मण ओम हंसा विद्महे परम तन्नो हंस प्रचोदयात् ओम व्यासाय विष्णुपाय व्यासुदाय योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मलोकाय हिडिमे गुरुकुल ओ श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय उमावर चंद्रचूड़ भगवान की जय श्री रामायण महाभारत भागवत उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र योग वासिष्ठ पातंजलि योग दर्शन अध्यात्म रामायण सूत संहिता शिवपुराण समस्त सनातन धर्म वैदिक संस्कृति श्रुति स्मृति पुराण इतिहास शास्त्र की जय श्री वेदव्यास शुकदेव सूतादि भागवताचार्य की जय वेदव्यास हस्त वाल्मीकि विश्वामित्र तुलसीदास रामायणाचार्य की जय वेदव्यास वैशम्पायन आज्ञवल्क्य के आद्य शंकराचार्य ब्रह्म विद्याचार्य की जय हिरण्यगर्भ कपिल पतंजलि व्यासादि योग दर्शनाचार्य की जय बोलो भाई सब संतन की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय आनंद की जय हर नम पार्वती मदे हर हर महादेव हर सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद गोविंद जानकी जीवन स्मरण जय जय राम राम अम्बे में आदिमरा शक्ति माता की जय कमला माता की जय समस्त श्रोता भक्त साधक सेवक उपासक जिज्ञासु धर्म संस्थापक गण की जय भारत माता की जय सनातन धर्म की जय वैदिक परंपरा की जय शास्त्र ज्ञान परंपरा की जय गुरु परंपरा की जय. Right. Thank you, friends. Tomorrow we'll meet again, do our Swadhyaya Manana Chintana. Thank you.